Came here to study in the UK. Masters in Artificial Intelligence. वाह 5 days में Yeah. वीजा मिल गया. Thank you, Nisheeth, for joining us today. So why don't you tell us about yourself? Thank you for having me, Afsana. So my name is Nisheeth Jaiswal. I'm an international student. Came here to study in the UK. In India, I was working for close to 4 years in IT publishing company. I was more involved into data science, so I finally decided to pursue my master's in artificial intelligence. So I'm right now doing my master's in artificial intelligence from Aston University in Birmingham. I'm close to finishing off my course. So what was the duration of this course then? So the duration of this course is 1 year. I came over here in September 2020 because there was an option for students to take a deferral from their course, because at that time people were not sure about how the pandemic will go ahead. My course was only 1 year, so I did not want to spend so much time in India. So soon you will be graduating. Congratulations in advance. Okay, thank you. तो निशित ये बताइए फीस का कैसे है जब आप एप्लीकेशन भेजते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, और इवन बिफोर दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूके स्टडीज, व्हाट सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स यू हैव टू अपीयर फॉर, लाइक जीआरई, टोफेल, आईएलटीएस, क्या सीन होता है? I don't think the application fees is applicable for all the colleges. Like see. there are few colleges जिसके लिए application fees लगती है. And other than that, for preparation, so for me, I just gave an IELTS, the academic one. I gave my exam in February and the results came in like 2-3 weeks. Last year, the scene was that because the IELTS centers and IDP centers were closed, colleges over here were flexible. If you have like more than 65% of marks in English in your 12th, some colleges were considering that. And some colleges were also keeping their own English literacy test. Every college has their own set of IELTS band requirement. I see. And what is the percentage of that? Top colleges ka zyada hota hai, and like for average colleges it is a bit less. But now, because things are going back to normal, like you will have to at least appear for IELTS. I see. So application process को कितना time लगा? Like once you gave your IELTS, you got your results. Now you have to prepare your package so that you can apply for universities like SOP, LOR. So ये सब कैसे manage किया और कितना time लगा इसके लिए? The letter of recommendation is not very much mandatory at the time of application. The statement of purpose which you have to write, that is like one thing which is required along with your application. The letter of recommendation can also be submitted at a later stage once you have an initial offer, because you get the offer 2 times. Once like you get the initial offer, then you have to confirm, and then you get the final offer. It took me more than a month because everyone was in lockdown, and I have to like chase my managers and other things. Then they also did not had an idea what should be the format of letter of recommendation, because bahut log ke liye it is for the first time they are writing it. So but alongside with that, like after I applied for my application, so I started getting into preparation of fees and other things. तो वो आप laterally side by side after your application आप कर सकते हैं. It is like around 6 months. Yeah, but 3 months is also fine. उसमें भी हो जाता है. But that also again depends on some colleges, because कुछ colleges में जिसमें बहुत ज़्यादा applications जाती हैं, उनमें मतलब you have to apply as soon as you can. In some colleges the things are that you have to even apply 1 year before. तो निशित ये बताइए, अब हमने एप्लीकेशन भेज दिया यूनिवर्सिटी को और हमें एडमिट आ गया है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? मीनिंग फंडिंग कैसे दिखाना है, या फिर वीजा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है हमें इस टाइम पे? अप्लाइंग फॉर वीजा तो वो काफी बाद का स्टेज हो गया. Once you receive your offer letter from the university, then you have to decide like how you are going to pay your fee. If you can manage everything by yourself, then that is well and good. That is the fastest way possible. If you're looking for any educational loan, now educational loan के लिए the thing is that
वो बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. यू हैव टू लाइक गो एंड चेज बैंक्स, लुक एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द बैंक्स आर गिविंग. Right. मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक स्टूडेंट्स गो फॉर एसबीआई क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होता है. बट इन एसबीआई लाइक एज एवरीवन नोज कि टाइम बहुत जाता है. टाइम बहुत जाता है. एंड एक वी मेक स्कॉलर करके हैं, आई जस्ट कॉन्टेक्टेड देम, सो दे प्रोवाइडेड मी अ डॉक्यूमेंट लिस्ट. अच्छा. सो आई काइंड ऑफ लाइक फॉलोड दैट. अगर आप वर्किंग हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न, आपके अगर फैमिली मेंबर और या फादर अगर मतलब आपके लिए लोन ले रहे हैं तो उनका इनकम टैक्स रिटर्न्स, बाकी आपके इनकम प्रूफ कितनी रही है, द कोलैटरल फॉर योर एजुकेशनल लोन, जैसे इफ यू आर टेकिंग द लोन अगेंस्ट योर हाउस तो आपके हाउस का पेपर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये जो है ये थोड़ा टाइम लेती है. वंस यू गेट दैट तो आपको बस सैंक्शन लेटर उसका चाहिए एंड अलॉन्ग विथ योर क्वालिफिकेशंस. इनिशियल ऑफर जब आपको आता है देन यू हैव टू मेक अ स्मॉल पेमेंट to confirm your seat, and once you have confirmed your seat, so you will be getting your CAS, I think, from the college, I see. CAS letter, and using that you can apply for your the visa. तो निशित ये बताइए, वीजा इंटरव्यू के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यूएस में तो वीजा इंटरव्यू के लिए जाना ही होता है अगर आप यूएस में स्टडी के लिए आते हैं. तो यूके में क्या प्रोसेस है वीजा एप्लीकेशन का और इंटरव्यू का? यहाँ पे मेरे को इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ा था. यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है. सो यू हैव लाइक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. जो आपका स्टूडेंट कंफर्मेशन लेटर है, कैश है, अगर आप सेल्फ फंडेड है तो आपको उतना फंड्स आपको अपने अकाउंट में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में शो करना पड़ेगा. आपके लास्ट 6 मंथ्स के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, वो तो मैंडेटरी लगता ही है. अगर एजुकेशनल लोन ले रहे हैं तो बैंक से लेटर चाहिए. सो ऑल दोज लेटर्स वीजा ऑफिस में जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा. वो स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देंगे एंड द सॉफ्ट कॉपी दे विल कीप इट. आपका बायोमेट्रिक भी वहाँ पे हो जाएगा विच टेक्स 15 मिनट्स to 30 मिनट्स. फिर वो आपका वहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाता है. आपको नोटिफिकेशन वहाँ से फिर आएगा कि whether your application is accepted or not. नहीं होगा तो उसमें कुछ अगर कमियां होंगी तो आपको इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट रह गया तो वो आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो हो जाता है. आई वॉज अ बिट लकी कि मेरा वीजा प्रोसेस जो था वो विद इन 5 वर्किंग डेज में हो गया था. वाओ, दैट्स सच अ शॉर्ट पीरियड. 5 डेज में वीजा मिल गया. हाँ, सो मेरे को वो नोटिफिकेशन आ गया था. तो उस समय डिलीवरी तो हो नहीं रही थी, सो आई हैड टू गो टू द वीजा ऑफिस टू कलेक्ट माय डॉक्यूमेंट्स. तो आपने मुंबई में अप्लाई किया था? Yeah, few of my mates in Bangalore also got their visa very quickly. Who applied in Delhi, वहाँ पे टाइम लग रहा था. So yeah, I think like it was a process of 7 or 8 days, including the weekends. और इसका फीस कितना लगा था वीजा अप्लाई करने के लिए? It's somewhere around 40,000 or something like that. Okay. And also you have to take your IHS for the duration of your course, that Immigration Healthcare Services. IHS only works as your health insurance over here. Last year it was less, I think वो भी 35-40 की रेंज में था. From now on I think उसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है after like the pandemic and things. वो आपको देखना पड़ेगा कि वो ये दोनों का प्राइस कितना आता है. So once you take your IHS, so आपको एक NHS नंबर अलॉट हो जाता है. यहाँ UK आके वो GP रजिस्टर जब करेंगे तो वो आपको आपका NHS नंबर बता देंगे. ऑलराइट, तो अब हमें वीजा मिल गया है और अब हम फ्लाई करने के लिए रेडी है. यू लैंडेड इन UK Heathrow एयरपोर्ट, आई गेस. सो व्हाट हैपेंड एट द पोर्ट ऑफ एंट्री? हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? Heathrow क्योंकि काफी बिजी एयरपोर्ट होता है, वहाँ काफी ज्यादा लंबी लाइन होती है. कुछ घंटे लग जाते हैं वहाँ पे. जब आपका वीजा आता है तो वीजा के साथ एक लेटर आता है, वो मेन होता है, which you need to show to the immigration officer. Along with that, if they ask, then you have to tell them where you are going to stay and which college you have taken your admission, how you are going to manage your funds. They may ask this thing, they may not ask this thing, वो depend करता है. But like it's better to keep documents for these if in case they ask. Visa letter which you receive, that is the most important thing. और एक बार पोर्ट ऑफ एंट्री हो गई, उसके बाद में फिर आपने अकोमोडेशन कैसे फाइंड आउट किया? कहाँ पे गए आप रहने के लिए? आपने इंडिया से ही बुक किया था क्या,
कि फिर वहां पे होटल में थोड़ा दिन रह के देन यू फिगर्ड इट आउट? हाउ वाज द सिचुएशन? Actually, the thing is, like, once you take your admission, you generally tend to find out like WhatsApp groups, and हर college का अपना एक self help groups होते हैं. Go over there and find out like how are the accommodations and how you are going to stay over there. So I booked the student halls. उसके लिए भी मैंने application वहाँ पे डाल के रखा था, and I got that allotted to me. If you're staying on your campus, it may be costing you a few pounds more. Some students also, like, they form their own groups and search for flats. Some students, what they do, they book students all for initial few months, and then they think, okay, now let me go outside and stay a cheaper option. So Right, it's right. totally open to the students. I see. So let's talk about cost then. Like how affordable student hall is for Indian student, I would say. It's 145 pounds per week. I So see. that comes closely to 600 pounds a month. चीपर कॉस्ट पे भी मतलब accommodations are available. उसके लिए रश बहुत ज़्यादा होती है. Those gets filled on the first come first serve basis. You will also get student halls like at 120 pounds a week as well. Yeah, cost like vary करता है. So it's just up to you. Like you can look for it, and you can look for the area where you want to stay. हर student को यहाँ पे एक individual room मिला होता है. The kitchen is only which you have to share. So the best thing about this one is that you have your own washroom and bathroom, Right, right. which is there, and you have not to share with other people. किचन कितने लोगों के साथ में शेयर करना पड़ता है? हम लोग के लिए for postgrad students a flat of 5 rooms, so kitchen will be shared among 5, and अगर undergrads का है, so in one flat there will be 7 people. Around 600 हम मान के चलते हैं अगर आपको डॉर्म्स में रहना है. अगर बाहर रहना है तो ऑब्वियसली थोड़ा और कम हो जाएगा. पर ग्रोसरी का फिर कैसे है? उसका कितना एक्सपेंस होता है, या फिर आपको कम्यूट करना है तो ऑन एन एवरेज मंथ में आपका टोटल कॉस्ट कितना होगा? Monthly, I think maybe 100 pounds और something कुछ expense होता है. आप अगर काफ़ी चीज़ें ले रहे हो और वो तो 100 to 150 pounds होता है. That is for the groceries. Other than that, अगर आप कभी बाहर खाने जा रहे हो तो उसके expenses अलग हो जाते हैं. When I was doing my initial calculations, तो मैंने कॉलेज को मेल किया था कि please let me know what would be an initial cost of living. They just provide you an estimate of the cost of living. The figure which they gave me, it was somewhere around 10,000 pounds for 12 months. Now, this 10,000 is including your cost of accommodation. So that is an estimate which they gave. मतलब उससे कम ही लगता है, उतना आप उस लिमिट पे जाओगे नहीं. इसके अराउंड आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं. आई थिंक द बेस्ट वे टू गो अबाउट इज व्हेन यू आर डूइंग योर एडमिशंस प्रोसेस, तो आप एक अपने कॉलेज से ही पूछ लीजिए कि मतलब कि मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे कितना होने वाला है, बिकॉज आई हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स इफ आई हैव टू इंक्लूड माय कॉस्ट ऑफ लिविंग इन माय एजुकेशनल लोन, which banks are open to provide. So आप उनका दिया हुआ जो फिगर है वो आप बैंक में इन्फ्लेट करके शो कर सकते हो, because it is better for you to show a higher figure when you're applying for loan, right, and take the lesser amount. In case अगर ऐसा सिचुएशन हो गया कि आपके पास फंड्स की कमी पड़ गई एंड मतलब एजुकेशनल लोन भी एग्जॉस्ट हो गया, then like the amount cannot be bumped up again. Right. उसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि आपके मतलब डे टू डे लिविंग पे, आपके फैमिली पे भी उसका उतना ज्यादा मतलब इफेक्ट नहीं आता है कि यू नो दैट ओके दिस मच अमाउंट, मतलब कि बैंक हैज लाइक सेड दैट दे विल प्रोवाइड टू यू. इन केस आपको जरूरत है तो आप ले लीजिए, नहीं जरूरत है तो मतलब कि लेने की जरूरत नहीं है. जब आपका कोर्स खत्म होगा तो आपने जितना अमाउंट लिया है बस उतना ही अमाउंट पे आपको रिपेमेंट करना है. तो निशिथ ये बताइए, ट्यूशन फीस का क्या सीन है वहां पे? अगर हम एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करें 1 ईयर प्रोग्राम की तो कितना पैसा लगता है? आप पाउंड्स में बता सकते हैं या फिर INR में भी बता सकते हैं? हर कॉलेज का अपना अलग ट्यूशन फीस होता है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस के अराउंड 15,000 पाउंड्स भी होते हैं, कुछ कॉलेज के 20,000 पाउंड्स भी होते हैं, कुछ कॉलेज के 25,000 पाउंड्स भी होते हैं, and even some colleges go beyond 30,000 pounds as well. Wow, for 1 year program. Yeah, for my course, this was I think 19,500. It's not that cheap. Yeah, so 19,500 जो था that was like 1 year का ये था.
And for the payment, so you have the option that you can pay the entire fees in 3 installments, one in 50%, then 2 installments of 25% each. My college had like this option that you can pay in 3 installments. A piece of advice over here is like, okay, if you have the funds, then you can pay the funds at a time or two at a time. But if in case you're taking an educational loan over here, then you can see that the more installments you have to like pay the fee, तो वो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। जितनी बार आप इंस्टॉलमेंट लोगे उतना अमाउंट आपका एजुकेशनल लोन में काउंट होगा, और जितना अमाउंट आपने लिया है उतने अमाउंट पे फिर आपको इंटरेस्ट लगेगा। राइट, डेफिनेटली यू कैन रिड्यूस दैट इंटरेस्ट अमाउंट देयर। तो निशित ये बताइए, ऑन कैंपस जॉब्स, ऑफ कैंपस जॉब का क्या सीन है वहाँ पे? ऑन कैंपस जॉब्स कॉलेज के थ्रू भी मतलब बहुत से जॉब ओपनिंग्स आती हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस इफ यू आर सक्सेसफुल इन गेटिंग एनी ऑफ दोज, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कॉलेजेस का आई थिंक असिस्टेंस भी होता है, द प्लेसमेंट सेल्स जो होती हैं वो आपको असिस्ट करती हैं टू मेक योर CV एंड योर कवर लेटर्स एंड ऑल दोज थिंग्स एंड हाउ यू कैन tailor those when you are going to apply for that. When I was in college, एक team था मतलब for experienced students, जहाँ पे weekly we used to get together and like okay we used to share our thoughts initially what we did and all those things, just to get an idea of other experienced students in the universities what they are doing. And if you're doing a master's course, so there can be like a lot of people with different working industries, different age groups and different things. MBAs में बहुत variety of background से लोग आते हैं, different age groups से भी आते हैं. Even in my course also there is quite a variety of like in age groups. So people are from even who have recently completed their graduation to even people who are like 10-20 years experience के साथ मतलब हैं लोग. ये चीज आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बोली है कि आप जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने मिलता है, क्योंकि लोग जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से यहाँ पे आते हैं और उनका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज बैकग्राउंड तो अलग ही रहता है, और हमें भी एक नया एक्सपोजर मिलता है, उनके साथ में काम करते हो, एक नई चीज सीखने के लिए मिलती है। चलिए अब जॉब के बारे में बात करते हैं। अभी सिंस यू आर अबाउट टू ग्रेजुएट, जॉब मार्केट कैसे लग रहा है आपको और अप्लाई कैसे करेंगे, और इवन बिफोर दैट क्या आपने इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया? There are some courses जहाँ पे internships are included as a part of their course. Mostly those are in MBA courses. In my course, like the internship was not a part of my course, but to gain UK experience, I opted for the internships. So वो आपके लिए थोड़ा better हो जाता है, just to get a reference, an external reference. As an international student, you can only do 20 hours a week. उससे ज़्यादा मतलब आपको आपका वीज़ा नहीं allow करता करने के लिए. So once your term time gets over, then you have the flexibility to move over to a full-time job. अपने कॉलेज पे भी बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, जॉब एप्लीकेशन पोर्टल्स, जहाँ पे आप देखते रहते हैं कि which companies are like are coming with offers and you can apply for that. Right. Apart from that, you can use like LinkedIn as one of your platforms to search for jobs, and Indeed.com is also like one of the good job search sites. You are about to graduate, अब जॉब ऑफर है, पर अब जॉब करने के लिए वर्क परमिट कितने टाइम का मिलता है वहाँ पे? Once your student visa ends over here, you can apply for post-study work visa, which has started from this year itself. I see. So that's so that is like one good thing for the international students over here. For the students who are doing masters over here, they can get a post-study work visa for 2 years, and the students who are doing like the PhDs, उनके लिए post-study work visa is for 3 years. Most of the time the employers are asking like do you need a sponsorship or not, because many times like they do not sponsor a candidate, so uske liye like then this post study work visa comes in handy. Where you can take this visa and like you can tell the employees that okay, I have a post study work visa on which I do not need any sponsorship to work on, then you can like apply for the jobs. But till last year that visa was called tier 2 visa. अभी उसका नाम चेंज हो गया है शायद, एंड दैट इज कॉल्ड स्किल्ड वर्कर वीजा. आपने MBA किया है तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे. आप अगर आपका कोर्स STEM में आता है तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे. PhD हैं तो उसको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे.
तो वैसे वो है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम हो गया है. Yeah, So because for companies also it's like additional cost if they want to file for your work permit. Tier 2 वीजा जो है वो उसका एवरेज ड्यूरेशन कितना है, तो कितने टाइम तक Tier 2 पे रहना होता है so that you can apply for PR? once you have completed your 5 years, then that will be counted towards your ILR. मतलब यहाँ पे ILR बोलते हैं, indefinite leave to remain. फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि अंडर ग्रेड्स में आए हैं, फिर अंडर ग्रेड्स में स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेड्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेड्स में भी स्टडी कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड स्टडिंग हियर इज नॉट काउंटेड. एंड ऑल्सो आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का जो ड्यूरेशन है, दैट इज ऑल्सो नॉट काउंटेड. लुक फॉर अ स्टेबल जॉब. इफ इवेंचुअली यू गेट अ स्पॉन्सरशिप ओवर देयर, उसके बाद से वंस यू गेट टियर 2 या स्किल्ड वर्कर्स वीजा जो है, अगर कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो फिर वहां से आपका टाइम जो है वो काउंट होगा. द स्टूडेंट्स टू गेट लुक फॉर अ स्टेबल जॉब एंड अ जॉब वेयर इफ इवेंचुअली यू गेट अ स्पॉन्सरशिप ओवर देयर, देन उसके बाद से वंस यू गेट टियर 2 या स्किल्ड वर्कर्स वीजा जो है, अगर कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो फिर वहां से आपका टाइम जो है वो काउंट होगा. द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्टडीड ऑन योर स्टडीज एंड द PSW इज नॉट काउंटेड इन योर ILR. आई सी. वाह, ये तो बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है उससे, क्योंकि आप वहां पे रहे हो बट एट द सेम टाइम बेनिफिट भी है क्योंकि आप कल्चर एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप एक्चुअल यूके में रह के वहां का वर्क सीख रहे हो एंड यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस इन अ वे, सो दैट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल. व्हाट मोटिवेटेड यू टू मूव टू यूके? आप तो इंडिया में जॉब कर रहे थे, अच्छा खासा जॉब चल रहा था, तो ऑल ऑफ द सडन ये परिवर्तन आया कैसे? I was working as a data engineer over there, और मेरा थोड़ा सा inclination था towards data science and AI and other things. So prior to that, एक बार मैं UK आया हुआ था through my company. So यहाँ का भी आके मैंने environment थोड़ा एक बार देखा था, तो वो मेरे को ठीक लगा. यहाँ पे colleges में मैंने apply किया and I looked into like what is the course curriculum. It's a kind of an advice कि मतलब कि the course which you are going to study, उसका पूरा कोर्स करिकुलम देख लीजिए. व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन बाय द एंड ऑफ द कोर्स, आपको क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए. तो डिपार्टमेंट के भी जो लोग थे उनसे भी मैंने ईमेल के थ्रू एक आध बार वैसे बात किया था. मैं सोचा कि ओके, यूके लुक्स टू बी अ गुड ऑप्शन. All right, Nisheeth, thank you so much for sharing your experience and spending time with us. I really appreciate because ये जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है ये लोगों को हेल्प करेगा when they will be preparing for masters, especially in UK. और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको वो लोग ध्यान में रख के अपना पैकेज जो है अच्छे से बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं, वीजा, ट्यूशन फीस के बारे में प्लान कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीजें हमने कवर की है. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. थैंक यू फॉर हैविंग मी.